write in the heading types of matrix. See, मैट्रिक्स का अपना एक अलग एल्जेब्रा है. क्यों अलग एल्जेब्रा है? बिकॉज अगर आप किसी भी मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक अगर आप रीड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था क्लास 11 में, एंड नॉर्मली वी डू यस यस नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं और भी काफी सारे मैथ्स के डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं. कैलकुलस अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12 में. तो सबका अपना एक तरीका होता है ऐड सब्ट्रैक्ट होने का, सबके अपने एक टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो वैसे ही मैट्रिसेस जो है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है और इसका कुछ अलग एक मेथोडोलॉजी है ऐड सब्ट्रैक्ट होने की. इसके डिफरेंट टाइप्स है. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट इज द कॉलम मैट्रिक्स. एज पर द नेम सजेस्ट कॉलम, है ना. बस ऐसे एक कॉलम दिखाई देता रहेगा. तो एक कॉलम दिखाई देता रहेगा. आप मेरी एक बात समझना कि भाई कॉलम तो कैसा भी दिखाई दे सकता है. ये भी तो एक कॉलम है, ठीक है. कॉलम, बट कॉलम के फॉर्म का मैट्रिक्स हाउ ऐसे रहेगा. ये ब्रैकेट एंड दिस इज द ब्रैकेट. यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे वर्टिकली. तो वर्टिकली बहुत सारे एलिमेंट्स रहने का मतलब ये हो गया हियर वी हैव नंबर ऑफ रोज बट ओनली वन कॉलम, ठीक है. Here we will have number of rows but only one column. If I can talk about this particular matrix, then you can say it is nothing but matrix of 4 cross 1. One thing I want to tell you, whenever you write the order of this matrix, the number of rows should always be in the first and number of columns will be having second parity. It means number of rows into number of columns will represent the order of matrix. So if we see about this particular matrix, so this is the matrix of 4 cross 1. It means here we have more number of rows and only one column. So such kind of matrix are known as column matrix. Here you can see your book has already given some example, right? It means this will be the special format, a general format of your column matrix, ठीक है. Since आप लोग के में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गया है अब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग काफी लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, तो कुछ भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, सिली सा, कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म m क्रॉस 1. अपन अब गायब हो गए कि भैया ये m क्या है, ठीक है. m मतलब m नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं बट कॉलम एक ही होगा. सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट द रो मैट्रिक्स, सिर्फ रो हो गया, ऐसे रो में नंबर्स दिखेंगे, कुछ भी लिख लो आप, 2 3 1. So here you can see the row is only one, but you have 3 columns. It means 1 cross 3 का ये आपका मैट्रिक्स है, 1 cross 3 का, right? So its general its order will be, इसको generally अपन कैसे देख सकते हैं, its order will be 1 cross n. It means 1 row and n number of columns. Okay, so this is your row matrix. Okay, now the third is a square matrix. स्क्वायर की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? You all know that square का जो साइड होता है, all sides are equal in length, ठीक है. ये measurements of all sides are same, ठीक है. यही होता है अपना स्क्वायर. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? If any of you want to speak anything, okay, let me speak. जैसे यहाँ पे सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फॉर एनी स्क्वायर है ना, नॉर्मली जो ज्योमेट्री होती है. सिमिलरली इफ आई मेक वन मैट्रिक्स ओवर हियर, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी लाइक m क्रॉस m और n क्रॉस n. अब ये m क्रॉस m और ये n क्रॉस n क्या बता रहा है? दैट वी हैव आइदर सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आइदर नॉट वील हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. वो कैसा भी ऑर्डर हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4. इट मीन्स इफ आई राइट 2 3 1 0, दिस इज अ square matrix. Why so? The order is 2 cross 2. It means number of rows is equals to number of columns. If I'll make a matrix like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you can see it is a matrix of 3 cross 3. We have 3 number of rows and 3 number of columns. Okay, so such kind of matrix known as square matrix. इसकी बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इफ नंबर ऑफ रोज
जैसे अपन normally represent करते हैं will be depicted by m and number of columns will be represented by n, then m should always be equals to n. Then m should always be equals to n. Then and only then it will be a square matrix. Okay. Now let's move further. We have done the three types of matrix: column, row, and square matrix. If we'll move further, the next is diagonal matrix. Diagonal matrix. In diagonal matrix, as per the name suggests, diagonal is dominating. Diagonal. जो आपके ज्योमेट्री में डायगोनल की मीनिंग होती है, सेम वही मीनिंग यहाँ पे भी डायगोनल की. इट मींस व्हेन यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट मींस जब आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके अंदर आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इनसाइड स्क्वायर मैट्रिक्स there will be diagonal matrix. Suppose I'm writing some value 1, 2, 3, 4, minus 2, 0, 5, 1, 6. So you will say, ma'am, this is the matrix of 3 cross 3, and it is what? It is a square matrix. It is what? It is a square matrix. But how will make this square matrix a diagonal one? If will remain unchanged the diagonal values, which is 1, minus 2, and 6. And if we'll make all other values as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, then such kind of matrix is known as diagonal matrix. So if we'll go through the definition, these kind of matrices are known as diagonal matrix, where the diagonal elements will be some element, diagonal values will be some elements, and other values will be 0. Okay. अब मुझे बताओ, अगर इसमें diagonal को देखूं, अगर मैं इस diagonal को देखूं, तो कौन सी टाइप की वैल्यूज, मतलब उस प्लेस में कौन सी टाइप की वैल्यूज आती है? लेट मी टेल यू, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैट्रिक्स, दिस इज 1, 0, 0 एंड 2. इफ आई विल आस्क यू दैट ये एलिमेंट कौन सा है, ये कौन सा एलिमेंट है, तो यू विल से मैम इट इज A11. ठीक है. और मैं पूछूंगी कि ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम इट इज A22. राइट, ऐसे ही बोलोगे ना. A11 क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. And 2 is why it is A22, because it is related to the second row and second column. So you can see that the subscript of the diagonal elements are as कि उनका number of rows और column का value same same आ रहा है. ठीक है. Similarly you can see here it is A11, A22 and it is A33. है ना. तो आप ये बोल सकते हैं भाई कि a square matrix तो इस फॉर्म में होता है, is said to be diagonal if all its non-diagonal elements are 0. That is, this is said to be a diagonal matrix if Bij is equals to 0, where I is not equals to j. Bij should be equals to 0 where I is not equals to j. मतलब ये सारी वैल्यूज आपके 0 होनी चाहिए. ठीक है. और बाकी ये जो सेम वैल्यू है, जहाँ पे आपका आइदर आप इसको Bij will be some element जहाँ पे I is equals to j है, मतलब ये बीच वाली. ठीक है. तो ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स और उसका रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. आप देख सकते हैं ये है आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा. दिस इज ऑफ ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ द स्केलर मैट्रिक्स, द नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. अब बात आती है, अभी हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वी हैव सीन डायगोनल मैट्रिक्स, एंड अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. हाउ? A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal. In the diagonal matrix, you can see the diagonal, in diagonal we have some elements, but they need not to be equal, right? But in a scalar matrix, the diagonal value should be equal, like this. Like this. Okay, so you can see the square matrix, the diagonal matrix, and scalar matrix are related to each other, right? So I have discussed all the kinds of your matrix inside a square matrix. Okay, now let's move further. See, आपको ये वाला representation सबको पता होना चाहिए ना, that Bij is equals to 0 where I is not equals to j. You can see this is 0, this is 0, this is 0, this is 0, 0. So, and the second one will be Bij is equals to some value, that is k,
when I is equals to j. So you need to write this thing. कभी आपका ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि वो इस तरीके से कंडीशन बना के लिखा हो, फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि यार मैम तो कभी ऐसा बताई नहीं थी, मैम सब बताई थे, कॉपी में होना चाहिए, है ना, कि किस मैट्रिक्स को, ये सब कंडीशंस आपको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दैट एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा, ये जो सबस्क्रिप्ट है आई और जे, आई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, right, and j represents number of columns. Okay, now let's have the next type of matrix, which is identity matrix. It is a very important matrix. एक तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स सारे इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको आता है तभी अपन पढ़ सकते हैं। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर 0। ठीक है, इन स्केलर मैट्रिक्स ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए थे, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते थे, बट इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको जरूर लिखिए आप, ठीक है, एंड दिस आर द एग्जांपल्स। ओके, सो इफ आई टेल यू कि मेक one identity matrix of 2 cross 2, so you will make 1 0 0 1. In diagonal elements there will be 1 1 and in the rest elements will be 0. And 3 cross 3 is like this, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So fill the diagonal elements with the 1 1 1. Kiran, do not write anything on the screen, otherwise I'll remove you. And this is 0 0 0 0 0 0. Okay, so this is your identity matrix, and this is very important matrix which will be used throughout your chapter, right? Now let's have the next matrix, which is zero matrix. Zero matrix, as per the name suggests, every element of your matrix will be equals to 0. It doesn't require any square matrix, it can be of any order. You can see it is 2 cross 2 matrix, but it is 2 cross 3 matrix, it is 1 cross 2 matrix, right? So guys, this is all about your types of matrix. We have total 7 types of matrix, and you just need to read at least it once, okay? Because board exams में these days your objective questions are coming, right? तो वो कभी भी ऐसा होता है ना कि बुक के किसी भी एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका बुक का एक एक लाइन पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीछे में एक ब्लू कलर का बॉक्स मेरा छूट गया था जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कभी भी ये जो नोट के अंदर ब्लू कलर का बॉक्स होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रीड करना है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and entries are like this, a1 1 2 2 ऐसा, ठीक है, are said to be constitute the diagonal of the matrix. Thus if a is equals to this, thus the elements of the diagonal of a are 1 4 and 6. और तो कैसे देखते हैं पता है, जैसे मेरे को पूछना है कि a के डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स है, तो उसको ऐसे पूछते हैं, DIAG of A is equals to, तो आप तुरंत लिखोगे 1 4 and 6, रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब ये हुआ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A. सो व्हाट आर दे आर 1 4 and 6, ठीक है, ओके। Now let's understand. Okay, now let's start with the new concept. Just write it down. Equality of matrix. After the types of matrix, we'll see equality of matrix. Equality of matrix, equal होने चाहिए दोनों matrix. अब equal कैसे होंगे? Equal to लगा के equal नहीं। Suppose we have two matrix, so their order should be same. जैसे ये 2 cross 2 का है, so the second matrix should also be of 2 cross 2. यहाँ पे 4 elements होंगे, here should also be 4 elements and each element should be equal. मतलब यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा, this is the element a11, so here it should also be 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, two matrix A and B are said to be equal if they are of the same order, each element of A is equal to the corresponding element of B. Each element of A should equal to the B नहीं बोल रहा है, should equal to the element of B. Each element of A is equal to the corresponding element of B, ठीक है, that is Aij is equals to Bij, है ना, ये सारे elements को represent करें, group of elements। For example, if we see this and this, these two are equal matrix, because suppose this is matrix A and this is matrix B, here you have 2 3 0 1, here also you are having 2 3 0 1, right?
And but in this matrix you can see the elements are more or less same. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 था तो 2 कर दिया, but overall चारों एलिमेंट को देखोगे तो सेम है. But हमने बोला corresponding elements should be same. That's why these two matrices are not equal matrices. Okay. So this is all about the theory of your exercise number 3.1. So let's start your exercise, and when we'll have questions, your concepts will get clear. Okay, let me share. Okay, guys. Here you can see I have taken few questions of your exercise number 3.1. Let us have the first question. In the matrix this, write the order of the matrix. फटाफट कर सकते हैं. The order of the matrix is, you can see there is a 3 rows and how many columns? 4 columns. It means the order is 3 cross 4. For the first question, the order is 3 cross 4. You can see that 1, 2, 3 rows and 1, 2, 3, 4, 4 columns. What is the number of elements? What is the number of elements? यहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा. जितने number of rows into जितने number of columns, you'll get the number of elements. Okay, so you can write one thing: number of elements will be equals to number of elements number of rows, number of element in rows into number of elements in columns, या फिर number of rows and number of columns. You'll get the answer. Write the elements. अब यार ये सब elements आप खुद से लिख सकते हो कि भाई A21 कौन सा है, तो second row and first column 35. अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास में A21 कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 35 है मैम. ठीक है, तो सिमिलरली आप ये सब फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, and what if it has 13 elements? If you have 24 elements, then what order you can have? तो बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं. हो सकता है कि ये 24 into 1 का मैट्रिक्स हो. It means 24 rows and 1 column. ये 4 into 6 का भी हो सकता है. 4 cross 6 का 4 rows and 6 column, या फिर 6 into 4 का 6 rows and 4 columns. तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन आपको 24 गिव कर सकते हैं, you'll have such kind of matrix. ठीक है, but what about 13 elements? If we have 13 elements inside any matrix, then कितने मतलब आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो 13 तो है जो किसी दो नंबर में ब्रेक नहीं होता, अदर देन इटसेल्फ एंड 1, राइट? तो इसके सिर्फ दो ही ऑर्डर पॉसिबल है. फर्स्ट इज 13 क्रॉस 1 एंड सेकंड इज 1 क्रॉस 13. Okay, it means in this first वाला मैट्रिक्स you'll have 13 rows and 1 column. तो ये कैसा मैट्रिक्स है? ये कैसा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा. और ये वाला कैसा होगा? ये है 1 रो है और 13 कॉलम्स है. ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा. ओके, now let's have question number 3. Question number 3 is, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? ये आप लोग कर लेना. ठीक है. Question number 4 is good question. Let's have question number 4. Construct a. See, we were in question number 4 and we are going to perform. Construct a 2 cross 2 matrix. Okay. And if something is given as aij is equals to I plus j whole square divided by 2. Okay. तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझा देती हूँ. भाई आपको एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है. ऐसे आपको कितने भी क्रॉस कितने का मैट्रिक्स आप बना सकते हो. जैसे हमारे पास मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये क्या है? ये किसी एलिमेंट की पोजीशन है. ठीक है, जैसे आप आई क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, राइट, एंड जे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, अब देखते कैसे. जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है? पहले जो बोला है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए, आप उससे एक डमी मैट्रिक्स बना लीजिए. ठीक है, लेट अस हैव मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 एज, कैसे दिखेगा आपको? ये A11, A12, A21 एंड A22 ऐसे ही तो रहता है. ठीक है, now I want to find A11. To find A11 I need to put I is equals to 1 and J is equals to 1. Where? Here. ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए A11 is equals to 1 plus 1 divided by 1 plus 1 whole square divided by 2. So it is 2 square divided by 2, which is coming out as 2.
Now to find out A12, I should be equals to 1 and J should be equals to 2. So it will be A12 and it is 1 plus 2 whole square divided by 2, which is 9 by 2. Okay, it is nothing but 4.5. Now A13 तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ पे है ना, हमको क्या चाहिए A21. तो आप A21 में आइए, जस्ट अ मिनट. A21. For this, I need to put I is equals to 1 and I is equals to 2 and J is equals to 1. So it will be A21. It is again 2 plus 1 whole square divided by 2, which is 9 by 2, 4.5. And now the last is A22. It means I की value आपको 2 रखना है and J should also be equals to 2. And it is A22. So it will be 2 plus 2 whole square divided by 2, which is 4 square by 2. It means 16 by 2, which is coming out as 8. ठीक है, तो आपका आंसर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 आया आपका 2, ये आया आपका 4.5, दिस इज ऑल्सो 4.5 और ये आ गया 8 एंड दिस इज माय आंसर. ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कुछ इसी तरीके से रिजेंबल करते हैं. आप कितने भी क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बना सकते हैं. अगर यही सेम क्वेश्चन 3x3 के लिए होता तो आप ऐसे लिखते A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 एंड आप वन बाय वन, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट किया है टू कीप दिस एलिमेंट हियर, राइट, एलिमेंट्स हियर, वैसे ही आप यहाँ पे पूरे 9 एलिमेंट्स फाइंड आउट करते जो भी आपको ये गिवन कंडीशन रहती है उससे. ठीक है, जरूरी नहीं है गिवन कंडीशन ऐसी हो. आपका सेकंड क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, जैसे अपन को दे दिया, सपोज करो I/2 या I plus J/2, ऐसे कुछ दे दिया, कुछ भी हो सकता है I minus of J. तो बस आपको ये जो वैल्यूज है उनके बीच में इस ऑपरेशन को जो भी कुछ गिवन रहेगा उसको परफॉर्म करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए और इसको जरूर देखिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.